with due respect to all the faculty members who are present here, this particular lecture is of immense importance for two category of people. Number one, people like our Honorable Vice Chancellor sir, who are presently at the helm of affairs, who are the policy making people. And second category of person for who should very carefully listen to this lecture is the students, who are the policy makers for tomorrow. Celebrating today GB Pant Memorial Lecture, and we have a very dedicated and renowned person, Dr. Anil P. Joshi ji, as a guest of honor. Let me congratulate the university first of all, having a very good, very dynamic leader now with us. We Indians had a word which unfortunately we forgot the impression of so-called Western way of development, and we had a word of prosperity. Prosperity means inclusive. सब कुछ होना चाहिए. समृद्धि शब्द का मतलब कभी ये नहीं होता कि आपको पैसा ही चाहिए. समृद्धि का मतलब आपकी हेल्थ भी है. समृद्धि का मतलब आपका घर, मकान, जंगल, हवा, मिट्टी, पानी, और आपके चारों तरफ जब सब कुछ ठोक हो तो आप प्रॉस्पर कहलाते हैं. You are called prosper. If the earth can only be saved with the only one slogan, ecology inclusive economy, because ecology will give you jaan or economy will give you jahan. The limitation what we have is we do not focus our the non-conventional energy system. We are still working on this coal and other this electrical energy. And there what we have seen that we are not addressing the how to protect, because we have to utilize some of the coal available with us. But at the same time, can we develop some sort of instrumentation or the technology where we can see that the coal pollution will not affect our environment, or we can check itself there, and we at the same time we can get the energy. हम बोलते हैं कि 316 टन आज हमारे पास अनाज है, और जो हम मानते हैं कि अगले साल जो है 328 टन हो जाएगा. बट ठीक है, वो रिसर्च तो हो रही है, पर क्या वो जो अनाज हम ले रहे हैं, मैंने देखा कि अगर गेहूं की हम बात करते हैं उसमें जिंक की अवेलेबिलिटी नहीं है. अब जिंक आपने देखा होगा कि कोरोना काल में हम बोले थे जिंक पियो, जिंक लो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिंक के सप्लीमेंट लो इन ऑर्डर टू मेंटेन योर इम्यूनिटी और इन ऑर्डर टू इनहांस योर इम्यूनिटी. अब देखा, अब जिंक हम अनाज जो खा रहे हैं उसमें जिंक नहीं है, उसमें कॉपर नहीं है, उसमें कोबाल्ट नहीं है, और मैं देखता हूँ कि रिप्रोडक्शन का आदमी हूँ मैं, सीधे इम्पैक्ट उसका होता है रिप्रोडक्शन में. आई में सभी डीन्स, डायरेक्टर, फैकल्टी मेंबर्स और प्यारे बच्चों का भी स्पेशल धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आपने अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय निकालकर आज माननीय मुख्य अतिथि कुलपति जी एवं आज के गेस्ट ऑफ ऑनर पद्म श्री पद्म विभूषण जोशी जी से कुछ आशीर्वचन प्राप्त किए, और भविष्य में ये कामना करते हुए कि हम पर्यावरण की रक्षा के लिए पूरा विश्वविद्यालय, क्योंकि हमारे पास सारे कॉलेजेज हैं, मिलकर काम करना चाहूँगा.